Good morning, everybody. Welcome you. Thank you, sir. Today, in the media conference with Lal Goel, which is brought to you by V4 News, Karu News, V4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon se, Samvad Sarokar News, Bharat Post News, Gyan, and Organ Donation India Foundation. Our endeavor is to enlighten you with the current topic. But before I will go on the topic, I would like to inform you that today, country lost a legend composer, Bappi Lahiri. Composer Bappi Lahiri, known for his synthesized disco beats, died in a hospital in Mumbai last night at the age of 69. Bappi Lahiri, one of the most influential figures in the Indian film music, was a pioneer of disco in the Bollywood of the 80s and 90s, composing super hit soundtracks for films such as Disco Dancer, Dance Dance, Chalte Chalte, and Namak Halal. He also had extensive music credits in the world of Bengali cinema. He sang several of his own compositions, among them Koi Yahan Nache Nache from Disco Dancer and Pyar Bina Chain Kahan from Sahib. Bappi Da, as he was known fondly, cut a dashing figure with his trademark gold chains and sunglasses. Chalte chalte mere geet yaad rakhna, kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna. This song, immortal song, was also composed by Bappi Lahiri ji. Media conference with Lal Goel pays homage to legendary Bappi Lahiri. Today, the country is celebrating Guru Ravidas Jayanti. Guru Ravidas Jayanti is celebrated on February 16th this year. This year is the 645th birth anniversary of Guru Ravidas. He was an Indian mystic, poet, social reformer, and spiritual guru who made remarkable contributions in the form of devotional songs, verses, spiritual teachings during the Bhakti movement. He also wrote 40 poems in the Adi Granth, which is the sacred scripture of Sikhism. He actively opposed the caste system, promoted communal harmony, spiritual freedom, and championed equality. He was also the spiritual guide of Mirabai. Media conference with Lal Goel wishes you all on this auspicious occasion. Now, coming to our main topic, that is judicial reforms in India. And I would like to inform our viewers that we have started this series of democratic reforms series, which we have started from last week. And last week, where the topic was the electoral reforms, and this time it is a judicial reforms. Justice delayed is justice denied is a legal maxim. It means that if legal redress or equitable relief to an injured party is available but is not forthcoming in a timely fashion, it is effectively the same as having no remedy at all. This principle is the basis for the right to a speedy trial and similar rights which are meant to expedite the legal system because of the unfairness for the injured party who sustained the injury, having little hope for timely and effective remedy and resolution. The phrase has become a rallying cry for legal reformers who view courts, tribunals, judges, arbitrators, administrative law judges, commissioners, or governments as acting too slowly in resolving legal issues, either because the case is too complex, the existing system is too complex or overburdened, or because the issue or party in question lacks political favor. In India, we have one Supreme Court, 25 high courts, and 672 district courts. There are 34 judges in Supreme Court. The number of total judges sanctioned in high courts are 1,098, of which 829 judges are permanent and remaining 269 sanctioned for additional judges as of 1st February 2022. 411 of the seats, about 37%, are vacant. There are 22,677 judges in subordinate courts in India. About 20 lakhs advocates are there in India. Judicial reform plays a central role in the efforts of the countries around the world to strengthen the rule of law. Judicial reform can include judicial administration, compensation, judicial independence versus accountability, performance evaluation, and judicial selection and retention.
The year 2020 was challenging for most public institutions in India. Due to the coronavirus pandemic, the lower house of parliament functioned only for 34 days in 2020-2021 fiscal year, the fewest days Indian lawmakers have gathered in a single year in the country's history. Like other institutions in the country, the Indian judiciary has found it challenging to function amid the risks and constraints created by the pandemic. Data from the National Judicial Data Grid shows that in 2020, the country's high courts, the apex courts in each Indian states and union territory, disposed of fewer than half as many cases as they did in 2019. However, since the number of cases instituted fell only by 1/3, the total number of pending cases increased. This problem has major consequences for India's judiciary and its wider political system. There are about 73,000 cases pending before the Supreme Court and about 44 million, that is 4.4 crores, in all the courts of India, up 19% since last year. Cases that have been in the court for more than 30 years are 1,05,560 as of January 2021, that is 1 year back. Our honorable judges are obviously using their space time fruitfully to ponder on what ails the nation, and the nation gives them enough spare time. Currently, the Supreme Court has 193 working days in a year, high courts 210 days, and trial courts 245 days. The Supreme Court has 5 vacations in its annual calendar, a summer break of 45 days, winter break of 15 days, and holy vacation of 1 week. It closes for 5 days each for Dashara and Diwali. According to a 2018 Niti Aayog strategy paper, at the then prevailing rate of disposal of cases in our courts, it would take more than 324 years to clear the backlog. And the pendency at that time was 29 million cases. Only 2.9 crores were pending at that time, while now it is 4.4 crores. Cases that had been in the courts for more than 30 years numbered 65,695 in December 2018, while it is now, last year it was 1,05,000. By January this year, it had risen more than 60% to 1,05,560. Our judicial system also remains the least digitized area of governance. According to a 2019 report, the Supreme Court, whose judges appear deeply concerned about pollution and deforestation, uses at least 48 million sheets of A4 sized paper every year, and the text has to be typed in 13-14 font size, double spaced, and with a 3 centimeter margin on either side. Our judges select themselves, and their choice is binding. Neither the legislature nor the executive can do anything about it. To quote from a 2014 Hindustan Times report, at least 16, that is 34% of the 47 judges in Punjab and Haryana High Court have kith and kin practicing law at the same place. Either these relatives have private practice, or the Punjab and Haryana government have accommodated them in respective Advocate General offices. The National Judicial Appointment Commission Act 2014, NJAC Act, has been notified in the official gazette on the 13th of April 2014. The judicial appointment mechanism provided for in these acts has become a subject of controversy, raising fresh concerns about judicial independence and accountability. Article 124A has been introduced in the Constitution of India, which provides for the National Judicial Appointments Commission, NJAC, consisting of Chief Justice of India, 2 other senior judges of the Supreme Court, the Union Minister of Law and Justice, and 2 eminent persons nominated by a committee consisting of the Prime Minister, the Chief Justice of India, and the leader of opposition in the House of People. And if no such leader is there, then the leader of the single largest opposition party in the Lok Sabha. The NJAC Act regulates the procedure to be followed by the NJAC for recommending persons to be appointed as judges of the Supreme Court and the High Courts, along with their transfers. The recommendation for appointment of judges has to be made on the basis of seniority, ability, merit, and other criteria of suitability as may be specified by the regulations of the NJAC. Based on these recommendations, the President has to make the appointment. Now, to discuss
this very, very important point, judicial reforms in India. Because as you know, so many cases are pending, and as I initially said, justice delayed is justice denied. We are going to discuss today in our program the judicial reforms in India, and we have a very elite, those who knows and those have full knowledge about this particular topic, those who are associated directly in this field. Panelists are with us. But before I will go to our main panelist, I would like to hear from a citizen as well as who is an educator, who is educating the, who is making the future generation, for 2-3 minutes, his views, whether we require judicial reforms after hearing my introductory thing. And he is Dr. Naveen Gupta. Dr. Naveen Gupta is a citizen and is the director of Hindustan Institute of Management and Computer Studies, HIMCS Sharda Group of Institutions, Mathura. Dr. Naveen Gupta, as we know that you are traveling right now, so I am taking you first before our legal luminaries will come. What are your views, whether we should go for judicial reforms or not? And if any suggestion from you, Dr. Naveen Gupta, please unmute. Thank you very much, Mr. Goel. Am I audible now? Yeah, please go ahead. See, बचपन से since childhood, civics की books में पढ़ते थे कि judiciary is the strongest pillar of democracy. And still we have a lot of expectation from the democracy. When जब भी कभी खतरा दिखाई देता है डेमोक्रेसी को, तो हम न्यायालय की शरण में जाते हैं. But मैं थोड़ा सा आम लोगों के बीच में रहता हूँ. We have a very learned panel today. We would like to see what is the problem. जैसे कि आपने गोयल साहब ने कहा है कि justice late is justice denied. लोग ये बात जरूर है कि अभी भी जुडिशरी में, because I know number of people, I mean few are from my family also, तो आज की तारीख में this is the only area or department we can say कि सुनने को मिल जाता है कि he is deadly honest. He is deadly honest. In any other department, to be very honest, मैंने कभी नहीं सुना, चाहे वो maybe a police department, maybe PWD और irrigation. Still इनमें से कुछ लोग मिल जाते हैं कहते हुए, भाई साहब के माध्यम से मैं सुनता रहता हूँ जुडिशरी में है कि वो बहुत ईमानदार आदमी है. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि they are also influenced by the politician, they are also influenced by the bureaucrats. एक किस्सा I would like with due regards with the all panelists, I would like to share कि मैं एक अपने विदेश से एक दोस्त आए हुए थे, डॉक्टर राकेश गुप्ता, एक शूज खरीदने हम लोग गए, तो वहाँ एक जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस. तो आई वाज सरप्राइज एंड ही वाज सरप्राइज, कहने लगे इंडिया क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है. 2 गाड़ी उनके पीछे, 2 गाड़ी उनके पास, और पूरी फैमिली जो है जूते खरीदने गई थी. एंड देयर वाज अ ट्रैफिक जैम ऑन सिकंदरा. भाई वो जो पुलिस की गाड़ी है, वो जो ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या इन लोगों के लिए बनी है? ये समाज में कुछ सवाल उठते हैं. तो मेरी कुछ क्यूरियोसिटी है, व्हाट कैन बी डन regarding the corruption. Number may be less, but they are also not untouched. People have lot of expectation from them, but वो पूरा का पूरा arrogancy, पूरा का पूरा bureaucracy, कहीं ना कहीं वो भी इस तरीके से influence हो जाते हैं. अब समस्या क्या है आम आदमी की? एक छोटी सी प्रैक्टिस है, आई एम जस्ट शेयरिंग सर, आंसर तो ये लोग देंगे. एक छोटी सी प्रैक्टिस है कि वो एक जज के नीचे जो पेशगार होता है, he keeps on collecting money. आम लोगों को नहीं पता कि what is this practice, and nobody has dared to stop. और वहीं से समझ में आता है एक गांव वाला आदमी है, एक सिंपल आदमी है, कहते हैं भाई ये तो ये सामने ही जस्ट पैसे ले रहा है, he has got a very bad image. हमारे पास जो आज पैनलिस्ट हैं वो इस इमेज को लगातार कंटिन्यूअसली दे हैव ट्राइड. उनकी भी लिमिटेशन हो सकती है. तो आई जस्ट वांट टू लिसन फ्रॉम देयर माउथ कि स्टिल आज भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं वो जोली LLB पार्ट 2 डायलॉग व्हिच आई रिमेंबर, आई विल सपोर्ट. वो एक लोगों की आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे, तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी विजय होगी. थैंक यू वेरी मच फॉर सेलेक्टिंग सच अ
wonderful topic, and that journey will make our democracy more stronger. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Dr. Naveen Gupta, for giving your views. Although you have spoken less, but you have given the thoughts to all of the panelists, so that now the panelist knows what is the views of the general public. Now, I would like to invite my first panelist guest, and he is Justice Rajiv Lochan Mehrotra. Justice Mehrotra is the former Allahabad High Court judge. He is the chairman of review committee, which looks after prevention of unauthorized activities, etc. Unauthorized Activities Act. He joined service as civil judge. He worked as district judge at Bijnor and Agra. He also worked as judicial member, State Administrative Tribunal. Welcome, Justice Rajiv Lochan Mehrotra on our show. Justice Mehrotra, you have heard the report which I read, and you have heard the views by Dr. Naveen Gupta. As a citizen, I will not say that as a director of the institute, but as a citizen, a common citizen, he has raised some points. I will not say fundamental issues, but this is a prevailing everywhere, not only in UP or anywhere, it's all over India. We would like to know your views on the very, very, very important, very sensitive topic, judicial reforms in India. Justice Rajiv Lochan Mehrotra, please. सभी को नमस्कार. सबसे पहले मैं am I audible? Yeah, you please go ahead. मैं अपनी बात से शुरू करता हूँ. दो चीज, एक तो ये जजेस हैं, चाहे किसी भी स्टेज पे हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के हों, they are all members of the same society, which selects IAS, IPS, engineers, doctors, and officers of the other services. So still we are to say that even more than 35% officers of the Lord Judiciary are still honest. जैसे हमने कहा अभी, हमें आज भी इस बात है कि अभी आज भी हम लोगों ने एक मोर देन 1/3 स्टाफ ऐसा है जिन्होंने इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन कर रखी है. हालांकि ये प्राउड की बात नहीं है. 2/3 अगर बेईमान हो चुके हैं तो हमारे लिए बहुत ये दुखद स्थिति है. सेकंड टॉपिक, जैसे अभी एक बात हुई कि पेशेवर नीचे बैठ के पैसे लेते हैं. मैं आपको बता सकता हूं कि काफी हाई कोर्ट के Justice Mehrotra, I'm just stopping you. Your network is weak. Is it any other devices connected with the same network, or you are using the mobile? I'm trying. Acha, you are also moving. Okay. Please go ahead. Justice Mehrotra, please go ahead. Justice Mehrotra, can you hear me now? Justice Mehrotra? I think we have lost Justice Mehrotra because his network is very, very low. Justice Mehrotra, are you there? Okay, we will take him once he will rejoin after his this thing, because this network is very, very weak. So once he will rejoin, we will take, because we want his views, which are going to be very, very important views. Meanwhile, what I will do, I will take the next panelist guest, and next panelist guest is Judge Pramod Kumar Goel. Judge Pramod Kumar Goel is BSc LLB Honors LLM. Am I audible? Am I audible? Yes. Am I audible? Yeah, you are audible, but you are not visible. I'm audible. Yes, sir. Justice Mehrotra. Am I audible? Justice Mehrotra, yes. आगे उन्होंने कहा कि yes. Second, उन्होंने कहा कि एक हाई कोर्ट ने सर्कुलर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि कॉपीज जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, मे बी बाई टाइपराइटर, मे बी बाई हैंड, उस पे दोनों पार्ट्स को वी विल प्रोवाइड कोर्ट. और उस पे उन्होंने रेट्स कर दिए थे 3 रुपीज पर कॉपी. अब वो ये प्रॉब्लम होती थी कि आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद पार्टीज को जो ही दिया, भले ही वो 6 रुपए हुआ, एडवोकेट जेब से 20 रुपए निकालता था. पेशकार साहब ये कॉपीज का पैसा लीजिए. हम लोग कहते थे कि भाई चेंज करा के लाइए. कहते अच्छा रखिए पेशकार साहब, लंच में हम आप हमको वापस कर दीजिए. वी न्यू इट. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर था हाई कोर्ट का, तो उनको पेमेंट करना था.
अब सेकंड चीज ये आ गई, देखिए ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की बात। पब्लिक सर्विस कमीशन से अपॉइंटमेंट होता है पीसीएस एग्जीक्यूटिव का, पीसीएस जुडिशरी का। लेस सेड इज बेटर। हम लोग पिछले 20 साल से देख रहे हैं जो कमीशन का स्टेटस रहा है, जो कमीशन की इंटीग्रिटी रही है, जो कमीशन के बारे में डाउट्स रहे हैं, तो वो अब किसी से छुपे नहीं है। शुरुआत हमारी इनिशियल अपॉइंटमेंट से वहीं से हो जा रही है। अब हम आपको जनरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा था हमको दो चीजें, देखिए एक तो क्वालिटी ऑफ जजेस चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जजेस हमारे पास क्वालिटी से खराब है, लेकिन बट वी नीड बेटर जजेस, जजेस ऑफ बेटर क्वालिटी। जैसा कि डिस्कशन में आया है कि एनजेएससी बना और कुछ और भी हुए, लेकिन हम इतने कह सकते हैं कि ये अकेला एक एलिवेशन का तरीका ऐसा है जो बिना किसी एग्जाम के होता है। अब तो इस पे से लेख, चाहे वो आप कहिए, चाहे आप नेपोटिज्म को कहिए, चाहे फैमिली मेंबर्स को कहिए, तो अब ये क्वालिटी से जब तक हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तब तक हम अच्छा डिलीवरी सिस्टम नहीं दे सकते। अभी सेकंड टॉपिक आपने, सेकंड पॉइंट लिया था आपने, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 वैकेंसीज आज की डेट में 160 वैकेंसीज का वहां पे प्रोविजन है। कभी भी 100 और 120 से ऊपर कभी नहीं हो पाए। हम लोगों ने एक चार्ट प्रिपेयर किया था जिसमें नंबर ऑफ डिस्पोजल, नंबर ऑफ जजेस को हम लोगों ने एक साथ रखा था, एक कमेटी थी हम लोगों की, और देखा था कि अगर 160 जजेस पूरे हों तो हम डिस्पोजल जितनी पेंडिंग, जितनी हमारी पेंडेंसी होगी इन ईयर, उससे ज्यादा डिस्पोजल दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एम को भी कह सकते हैं, आप गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, 1.5 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं। खास तौर से सर्विस डेज के भी जिनके नाम जाने चाहिए 58.5 पे। प्रोसीजर तो यही है कि एलिवेशन जिस जिस दिन होता है हमारा, उस दिन हमारी रिटायरमेंट एज भी मालूम हो जाती है, और हमारे रिटायरमेंट के 6 महीने पहले और लोगों के नाम चले जाने चाहिए। लेकिन हम लोग इसमें इग्नोरेंट हैं, ढीले हैं, या कोई और रीजन है, तो हमने कभी आज तक पूरी वैकेंसी अपनी फिलअप नहीं की, न तो हाई कोर्ट में और न ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। पिरामिड हमारा उल्टा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे पास जूनियर डिवीजन के ऑफिसर्स बहुत कम है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ज्यादा हो। हमारे पास नंबर ऑफ हाई कोर्ट जज हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम इतने कहना चाहेंगे कि वहां पे हम लोगों ने स्पेशली पिटीशन को अलाउ करके अपना बहुत बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि स्पेशली पिटीशन जो है ये एक्सेप्शनल केस में होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का जो मेन वर्क है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे है, प्रेसिडेंट के रेफरेंसेस पे है, या इंटरेस्ट डिस्प्यूट पे है, या सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट पे है। उनका बहुत सा काम ये वाला नहीं था जो स्पेशली पिटीशन में आज हम लोग चले जा रहे हैं, या बेल मैटर्स में हो या छोटे छोटे मैटर्स में हो। मेरा अपना सजेशन ये है कि कोर्ट ऑफ अपील को अलग कर देना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट लेवल पे हो या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो हो रही है सिविल के लिटिगेशन। आप देखिए कि सिविल में हमको आज भी याद है कि हम यहाँ पे इलाहाबाद में पोस्ट थे, हमारे सीनियर बैठे हैं श्री पी के गोयल साहब, वो भी यहीं थे। एक डॉक्टर साहब अपने बेटे को लेके, छोटा सा बेटा था, अब तो वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में है, उसको लेके वैसे ही आए मेरे पास, दोस्त थे हमारे बैठे, तो हमने पूछा कैसे आए, कहा कि वो केस चल रहा था इसको ले आए हैं, क्योंकि हमने कहा चलो बेटा जजमेंट तुम्ही को सुनना है, हमारी जिंदगी में तो हो नहीं पाना है। तो एग्जैक्टली ये लोगों में एक भ्रांतियां थी और सही भी हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में सेकंड अपील 78, 79, 80, 82 के सेकंड अपील्स हैं जिसमें केवल अब सब्स्टिट्यूशन ही होता है, सब्स्टिट्यूशन के अलावा और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। उसकी वजह ये हो गई है कि जैसा शुरू में हमने कहा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ बनाने के लिए यू नीड कंफर्टेबली एक्सपर्ट जजेस। हाई कोर्ट में जो एलिवेशन जिन लोगों का हो रहा है उनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में वो उनकी अच्छी जानकारी है, लेकिन
सिविल मैटर, हाउ टू डील विद सिविल अपील, हमें लगता है इसके लिए एक से पूरी टीम बनानी पड़ेगी जो अपीलेट, जो जिसको हम कह सकते हैं कि अपील कोर्ट्स यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी अपील ना हो, हाई कोर्ट लेवल पे एक कोर्ट ऑफ अपील हो जो सिविल के केसेस और क्रिमिनल की अपील, सिविल अपील और क्रिमिनल के अपील को तय करें। तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी इसी तरह से एक अपील का अलग से कोर्ट्स हो, लेकिन उनकी किसी की अपील कोर्ट में परमिटेड ना हो, अपील फाइनल। इसी तरह से क्रिमिनल अपील्स की क्वेश्चन भी यही है कि अगर कन्विक्शन, अगर आपने ऑफेंस किया है एट द एज ऑफ 50, तब फिर कोई भी आपको सजा नहीं कर सकता है टिल द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है। इस हाई कोर्ट में 82 की भी क्रिमिनल अपील्स पेंडिंग है, 85 की भी पेंडिंग है, 83 की भी पेंडिंग है। वो ये एक मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर आप अपील्स के कोड अलग कर देंगे तो बहुत से काम कोर्ट, हमें लगता है कि जिस अपने नॉर्मल वे में काम करें, हम अपडेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। सिविल कोर्ट्स में, सीपीसी में कुछ प्रोसीजरल सुधार होना चाहिए। आपने सिविल सूट तय कर दिया, सिविल सूट हमने आपके पक्ष में डिसाइड कर दिया, अब एग्जीक्यूशन में ऑर्डर 21 बना रखा है, इतना बड़ा एग्जॉस्टिव जिसमें मोर देन 100 रूल्स हैं कि आप कभी भी उसका एग्जीक्यूशन में भी आपको केस डिसाइड करने में जितना टाइम लगा आपको है, उससे ज्यादा वक्त आपको एग्जीक्यूशन में लग जाएगा, इतनी टेक्निकलिटी से फंस जाएंगे। इसकी भी थारो एक चेकिंग होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से रूल्स रिडंडेंट हैं और कितनी तेजी से हम एग्जीक्यूशन वर्क कर सकते हैं। अब जहां तक ये सारा दोष जस्टिस डिलेट का हमारे ऊपर आ गया, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जज अकेला होता है, उसके पास एक या दो क्लर्क्स होते हैं इसके अलावा, और कहने को उसके हाथ, कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो हम अपने समन्स, अपने वारंट्स, जितने भी चीजें हैं, हम ब्रिटिशर्स को बुलाना, ब्रिटिशर्स को समन करना, चाहे कंटेम्प्ट को नोटिस देना, इन सब के लिए हम एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड करते हैं। और एग्जीक्यूटिव के लिए ये प्रायोरिटी मैटर्स बिल्कुल नहीं है। पर्सनल एक्शन बता सकते हैं आपको कि जब कभी किसी मर्डर केस में भी अगर दरोगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को समन करना होता था और अगर उसका ट्रांसफर जिले के बाहर हो गया है, तो वो ये कहलाता था जब तक जज साहब 350 सीआरपीसी में हमको नोटिस नहीं भेजेंगे, हमारे खिलाफ वारंट नहीं भेजेंगे, तब तक हमको एसएसपी हमारा परमिट नहीं करेगा जाने के लिए यहाँ से। तो अब ये मजबूरी हमारी होती है कि हम नोटिस तब भेज सकते हैं, ये वारंट हो सकते हैं जो समन सर्विस हो जाए, बहुत टाइम इसमें लग जाता है। तो ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है एग्जीक्यूटिव वालों की, इसलिए हमारा सिस्टम में और भी डिस्पोजल में डिले होता है। एक कभी सीआरपीसी में पहले प्रोविजन था कमिटल का कि पहले अगर 302 का केस है तो भी मजिस्ट्रेट क्या जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट उसको कमिट करके सेशन कोर्ट में भेजेंगे। पहले बयान वगैरह भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते थे वहां के शुरू में, अब वो सारा प्रोविजन सीआरपीसी 1973 के बाद चेंज हो गई है। तो ये कमिटल वाला तो अब मेरे अपने ख्याल से इस प्रोविजन करना चाहिए। और स्टेट चार्जशीट जैसे पॉक्सको में आ रही है, गैंगस्टर में आ रही है, स्टेट वे में चार्जशीट सेशन कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। और सेशन कोर्ट फर्स्ट डे से ही ये कहा गया कि जो एक प्रोविजन है 207 सीआरपीसी में कि जितने भी एक्यूज हैं उन सबको उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दी जाएगी जिसपे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है। तो अब ये भी कोशिश हुई, कुछ हद तक कुछ जिलों में कामयाब भी हुई कि हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कहते हैं कि भाई अगर 8 एक्यूज हैं तो तुम 8 सेट बना के केस डायरी हमको दो, जिसमें फर्स्ट डेट पे जिस दिन एक्यूज आएगा हम उनको एक एक सेट दे देंगे और उसके बाद चार्ज की डेट लगा देंगे। लेकिन इसमें भी ढीलापन है, इसमें अभी भी एग्जीक्यूटिव बहुत स्मार्ट नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा उसमें उनका कोऑपरेशन नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, बीच में कभी कभी हमारे ड्रिल वाला काम हो रहा है, थोड़ा रेनोवेशन का कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, इसलिए आप लोगों को समझ आएंगे जी। तो ये देखिए, इसलिए केवल डिले हमारे पार्ट पे नहीं है डिले। अच्छा, थर्ड इश्यू इसका ये है कि एडवोकेट्स पे किसी का कंट्रोल नहीं। केसी जैन साहब माफी चाहेंगे आपसे, हम एडवोकेट्स पे कंट्रोल नहीं है, उनकी स्ट्राइक आप देख ही रहे हैं। हम लोगों से तो ये कहा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि बी ब्रेव, बी बोल्ड, मत स्ट्राइक को ऑनर कीजिए, आप बैठिए डाइस पे। लेकिन आप देख रहे हैं एपेक्स कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी स्ट्राइक होते ही जजेस अपने अपने चैम्बर में चले जाते हैं। वो जजेस जिनके पास एडिक्वेट फोर्स होती है, उनके पास शेडोज होते हैं, हम लोग तो सब खाली हाथ बैठे रहते हैं। तो अगर एडवोकेट दौड़ाएं तो हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं।
तो एडवोकेट्स स्ट्राइक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीच में उन्होंने सीपीसी को अमेंड किया था शायद 2000 के आसपास, जिसमें उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स कम देंगे आप। डब्ल्यूएस रिटर्न, अगर सिविल सूट फाइल किया किसी ने है तो आप प्लेंट के बाद विद इन 90 डेज आप डब्ल्यूएस फाइल करवा देंगे, उसके बाद फिर कोई टाइम नहीं देंगे। आप एडजर्नमेंट भी 2 या 3 देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। हम लोगों को खुशी हुई कि शायद अब हम लोग एडवोकेट्स को चेक कर पाएंगे। और उसके बाद भी चाहे सलेम बार स्टेशन का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो या कुछ और जजमेंट आए, उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं देन यू कैन गिव फर्दर एडजर्नमेंट। अब अनअवॉइडेबल तो वकील बना ही लेगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग उसी के हाथ में है। वो बढ़िया ड्राफ्ट करके लाएगा कि साहब ये प्रॉब्लम हो गई, मदर बीमार हो गई, हमारी फादर भी हो गए, क्लाइंट को डेथ हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके डेट फर्दर देने के। तो कहीं ना कहीं एक जो चेक लगा सकता था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खास तौर से, वो नहीं लगा पाया उन केस लॉस के बाद में। एक मेरा और नेक्स्ट सजेशन ये है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस तुरंत बनानी चाहिए। देखिए, जैसे पीसीएस जो है, ऐसे ही इंडियन जुडिशियल सर्विस बनानी चाहिए और उसके लिए यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को इसमें योगदान देना चाहिए। और एलिवेशन 90% एलिवेशन इंडियन जुडिशियल सर्विस से ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि कम से कम ये नहीं होगा कि हमारा और आपका बेटा अगर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अंकल सिंड्रोम चलेगा और आप हमारे बेटे को, हम आपको बेटे को देखेंगे। 10% एडवोकेट्स का एलिवेशन जरूर कीजिए जो इमिनेंट एडवोकेट्स हैं, लेकिन हाई कोर्ट में एलिवेशन के बाद भी, चाहे वो आईजेएस से हो या एडवोकेट्स को हो, अपने स्टेट में किसी को मत रखिए, उनको ट्रांसफर कीजिए और हर 3 साल बाद उनको एक दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते रहिए, ताकि इसके पहले के लोग उनको जाने, वो लोगों को जाने। जैसे एक और सर्विसेज में होता है, हमारी सर्विस में भी, लोअर जुडिशरी में भी होता है कि 3 साल बाद हमारा ट्रांसफर इसलिए होता है कि इसके पहले कि हम लोगों से दोस्ती कर लें, लोग हमसे दोस्ती कर लें, हमको कोई और जिले में शिफ्ट किया जाता है। एग्जैक्टली ये हाई कोर्ट जजेस के साथ भी लगातार होना चाहिए और अपने स्टेट से उनको हटा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो ये फ्रिवलेस लिटिगेशन बंद हो जाएंगे कि अगर हम जानते हैं कि हमारे गोयल साहब हमारे ब्रदर हैं तो हम फ्रिवलेस लिटिगेशन फाइल करके किसी मैटर को बहुत दिन के लिए फंसा सकते हैं। तो जब जजेस बाहर के होंगे, हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फ्रिवलेस लिटिगेशन बंद होंगे और इससे हमें लगता है शायद ट्रांसपेरेंसी भी काफी अच्छी होगी। हमारे सीनियर श्री बी के गोयल साहब बैठे हैं, अभी और बातों वो बताएंगे, फर्दर क्वेरी होगी तो बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Justice Rajiv Lochan Mehrotra, for giving your views. And Justice Mehrotra has highlighted why this delay in the judgments, why the and the blame. He says it's not only the judges, but the blame lies with everyone, because the judges are also from this same society from where we all are. So just to single out only the judges is not correct. And he has highlighted how the advocates strikes are impacting, how the corruptions are there, because there is circular 3 rupees, and everybody knows when there is a odd figure, no one is going to pay that odd figure, and definitely someone has to pay the maximum. I don't understand still the logic. Even in the on the toll gates we have seen they always keep a odd figure, so that there will always a delay in everything. But what he says is there are lots of suggestions which he has suggested, which he feels if it will be done, that it will reduce the burden of the judiciary and it will give more impactful things for the judiciary. Thank you very much, Justice Rajiv Lochan Mehrotra. Definitely in the next round, I will ask some questions to you. Thank you very much. Now, I would like to invite my next panelist guest, and he's Judge Pramod Kumar Goel. Judge Pramod Kumar Goel is BSc LLB Honors LLM. Is the former district and session judge. He received University Medal decoration for first position in LLB Honors by the Aligarh Muslim University. He is having over 35 years long excellent career in UP Judicial Services. He organized state level conference in Lucknow on making legal aid for justice and justice for women, from investigation to decision, a reality through a sanitized judiciary. He was rewarded in cash by the state government of Uttar Pradesh for excellent judgments in Hindi language. He attended various regional and national and international conferences. He worked as secretary to the single member Judicial Inquiry Commission constituted by the state government of Uttar Pradesh for judicial inquiry in the matters of violence, etc. in
Jawahar Bagh, Mathura. He worked as secretary to the monitoring committee constituted by Honorable NGT, Principal Bench, New Delhi, in the matter dealing with pollution in Hindon River and its tributaries. Worked as secretary to the inquiry committee for judicial inquiry in the matters of violences, etc. in Aligarh Muslim University, Aligarh. He is honorary legal consultant to Aligarh Muslim University, Aligarh. He is advisor to Shobit, deemed to be University Meerut. Welcome, Judge Pramod Kumar Goel on our show. Judge Pramod Kumar Goel, you have heard what Justice Mehrotra has mentioned. He has highlighted the problems and he has suggested his solutions. Now, you being such a senior and you have worked in judiciary for so long, we would like to know your views on judicial reforms in India. Judge Pramod Kumar Goel, please. Please unmute. Please unmute. Judge Goel, please unmute. Am I audible? Yes, please. न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा जी, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉक्टर नवीन गुप्ता जी, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री लाल गोयल जी, सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट श्री केसी जैन जी तथा इस आभासी परिचर्चा में उपस्थित देवियों व सज्जनों, कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे अपने मध्य उपस्थित होने तथा भारत में न्यायिक सुधार जैसे ज्वलंत विषय पर अपने विचारों से मुझे भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। A powerful and independent judiciary is of great importance for country's development. Sorry to say that the judiciary in India, though powerful, is charged as very slow and inefficient. Learned coordinator Shri Lal Goel Sahab had cited that justice delayed is justice denied. Equally important is the saying that justice hurried is justice buried. So we have to make we have to make a sense so that justice is neither delayed or buried. We have to deliver justice as soon as possible. मेरा कार्य क्षेत्र भी न्याय प्रशासन रहा है और मैंने उत्तर प्रदेश न्यायपालिका में लगभग 35 वर्ष से अधिक समय तक काम किया है। कहीं ना कहीं मैं भी न्यायपालिका जज गोयल जी, मैं फिर रोकूंगा, आप थोड़ा सेंटर में आ जाएं, एक साइड में जा रहे हैं। हाँ बस, बिकॉज लाइव टेलीकास्ट है तो स्टूडियो से। यस यस प्लीज। कहीं ना कहीं मैं भी न्यायपालिका की उक्त नकारात्मक छवि के लिए उत्तरदायी हूँ। विश्वास करिए, मैंने अपने सेवा काल में उत्तर प्रदेश में न्यायिक पालिका के विकास और न्यायिक सुधारों का अत्यंत निकटता से अनुभव किया है, लेकिन भारत में न्यायिक सुधार आज भी उतना ही अपेक्षित है जितना किसी पूर्ववर्ती कालखंड में था। मुझे याद आ रहा है कि वर्ष 1984 में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब का लेख प्रकाशित हुआ था, द विंग्स आर टायर्ड। This writer was regarding the take-off judiciary, how the judiciary can take off to deliver justice in time. So he said, when the wings are tired, you cannot expect the judiciary to take off. लाल गोयल साहब, आपने जो पेंडेंसी के विभिन्न आंकड़े दिए, उसी परिदृश्य में मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, अनुमति चाहता हूं कहने की कि भारतवर्ष में आज सूर्य का जो उदय हुआ है, उस उदय के समय भारतवर्ष के विभिन्न न्यायालयों में 1,08,48,926 दीवानी के मुकदमे और 3,03,37,874 क्रिमिनल केसेस, अर्थात कुल 4,11,86,800 केसेस आलंबित थे। 4,11,86,400 केसेस एज ऑन टुडे। इन केसेस में से
रफली 77.48% केसेस एक साल से ज्यादा पुराने सिविल केसेस जो थे उनमें से 77.48% केसेस एक साल से ज्यादा पुराने हैं और 77.65% केसेस क्रिमिनल केसेस एक साल से ज्यादा पुराने हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि गोयल साहब फिर आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा अच्छा, बीच। जी जी, थोड़ा सा, यस सॉरी। इसका मतलब हुआ कि रफली 3,19,63,000 से ज्यादा केसेस क्रिमिनल केसेस एक साल से ज्यादा पुराने क्रिमिनल केसेस कंट्री के विभिन्न कोर्ट्स में पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थापित 75 न्यायालयों में आज 98,97,500 केसेस, जिनमें से 19,07,184 सिविल केसेस और 79,90,316 सिविल केस क्रिमिनल केसेस हैं। इन 75 के कोर्ट्स के लिए उत्तर प्रदेश में कुल 3,634 जुडिशियल ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। उन 3,634 पोस्ट में से 1,105 पोस्ट खाली हैं और सिर्फ 2,529 न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं। अगर हम इस जो पेंडेंसी है और जो वर्कलोड है उसे देखें तो उससे होगा कि लगभग 4,000 केसेस एक जुडिशियल ऑफिसर के पास पेंडिंग है। देश में, जैसा आपने भी कहा, कि 26,721 ऐसे मुकदमे हैं जो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। मतलब 30 साल से पुराने ज्यादा केसेस, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूं साहब। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 26,721 ऐसे मुकदमे हैं जो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। और अगर हम 20 साल से 30 साल के ब्रैकेट में देखें तो वो उन केसेस के नंबर आएगा रफली 70,000, मतलब टू बी प्रिसाइज 69,390 केसेस 20 साल से 30 साल के बीच में हैं। तो अगर हम ये देखें कि रफली 26,000 27,000 केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से जिला न्यायालय के स्तर पे और 70,000 केसेस ऐसे हैं जो 20 से 30 साल से जिला न्यायालय के स्तर पर ही आलंबित हैं, तब आप सोचिए कि वो उस मुकदमे के वादी प्रतिवादी जो ओरिजिनल हैं उनमें से कुछ लोग तो स्वर्गवासी हो चुके होंगे, उनकी संतान है या उनकी जो अगली पीढ़ी है वो उसमें होगी और अभी तक न्याय की प्रतीक्षा में है। तो प्रश्न है कि क्या हम न्याय दे पा रहे हैं? और इसका त्वरित उत्तर होगा नहीं। भारत का संविधान त्वरित न्याय की अवधारणा को पुष्ट करते हुए फंडामेंटल राइट के रूप में इसे मानता है और कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसे त्वरित न्याय प्राप्त हो। लेकिन प्रश्न है कि क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं? Dependency above would not show that all stakeholders. Am I audible? Yes, please go ahead. Dependency above would show that all stakeholders must seriously think for changes in India's judicial system. Every Indian, though, has a right to justice through the courts. However, in truth, it has always been really difficult for the vast majority of poor people in India to access the courts. Judicial proceedings cost a great deal of money and paperwork, which needs lots of time and money and patience too. There is a lot to be proud of. The judiciary has been the pious ethics of the country, speaking truth to the political authority, defending citizens' freedoms, mediating center-state tensions, providing justice to the litigants, and protecting our democracy and democratic system itself on many momentous occasions. Despite its successes, a disparity between ideal and fact has become apparent over the years.
Justice delivery is sluggish, judicial process operate poorly, and cases frequently languish for years in each hierarchy. श्री नवीन गुप्ता जी ने एक ज्वलंत ही है और सामायिक भी है, एक प्रश्न किया कि न्यायालय का कर्मचारी न्यायालय में ही बैठकर पैसा लेता है। राजीव लोचन जी ने एक उसके प्रत्युत्तर स्वरूप यह बात कही कि न्यायालय में प्रतिलिपि प्रदान की जाती है और प्रतिलिपि का पैसा लिया जाता है और जिसे कोषागार में प्रतिदिन जमा किया जाता है। दोनों ही प्रश्न भी सही है, उत्तर भी सही है। मैं शेयर करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस। जब मैंने न्यायिक सेवा आरंभ की तो नियम पढ़े थे। नियमों में था कि साहब जब कोई किसी केस में तारीख लगाई जाएगी, आगामी तारीख जो तिथि नियत की जाएगी, उसकी पर्ची वादकारी को दी जाएगी ताकि उसके पास ये पुष्टि रहे कि मेरे केस में ये तारीख लगी थी। तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने हाथ से पर्ची जो तारीख लगेगी ऑर्डर शीट में खुद लिखता था और उसकी पर्ची में बना के हाथ के हाथ लिटिगेंट को पेशकार के थ्रू दे दिया करता था। एक दिन काम जल्दी खत्म हो गया था तो जल्दी चेंबर में रिटायर हुए और इसी बीच में एक केस ट्रांसफर होके आया जिसमें तुरंत सुनने के लिए कोर्ट में फिर दोबारा बैठना था। मैं कोर्ट में पहुंचा तो वहां देखा कोर्ट में भीड़ लगी हुई थी। मैंने पेशकार साहब से पूछा, मैंने कहा भाई कोई केस रह गया था, ये लोग कैसे खड़े हुए हैं? तो उसने कोई जवाब उसका नहीं दिया। इत्तेफाक से जो केस आया था ट्रांसफर होकर उसके एडवोकेट्स भी कोर्ट में आ गए तो उन्होंने भी मेरे और पेशकार साहब के वार्तालाप को सुना, मुस्कुराए और बोले साहब ये कुछ नहीं, ये जो लोग खड़े हुए हैं ये अपनी तारीख पक्की करने आए हैं। मैंने पूछा ये तारीख पक्की करना क्या होता है? तो बोले साहब इनके मन में ये भय है कि ये पेशकार साहब तारीख को बदल देंगे और जो आपने तारीख दी है वो शायद चेंज हो जाएगी ताकि इन्हें नुकसान ना हो, इसलिए ये पेशकार साहब को ये 2 रुपया देकर तारीख पक्की कर रहे हैं। तो जब मन में धारणा ये है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पर्ची को भी में दी गई तारीख को भी अगर कोई बदल सकता है, जब तक ये माइंडसेट हम चेंज नहीं करेंगे तब तक नवीन गुप्ता जी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा और वो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। यहां हमें अपने जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। राजीव जी ने जो डिलेज की एक बात की, उसमें डिले में ये कहा कि साहब हमको बहुत सारे कामों के लिए जैसे सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट्स वगैरह है जो न्यायालय का प्रोसेस है, उसकी तामील के लिए एग्जीक्यूटिव और पुलिस के ऊपर निर्भर करना पड़ता है और वो लोग समय से उसकी तामील नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से जो जिस दिन में केस लगा हुआ उस दिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है, उसको एडजॉर्न करना पड़ता है। काफी हद तक सही है, लेकिन इस समस्या पे विचार हुआ और कालांतर में समन सेल का गठन हुआ जिसे जिला न्यायालय में स्थापित किया गया और वो समन सेल अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रभार में प्रत्येक जनपद न्यायालय में, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वहां कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि क्या जो समन सेल जिला न्यायालय में स्थापित हुआ है वो उतना प्रभावी रूप से कार्य कर पा रहा है या नहीं? अगर तथ्यों का निर्वचन किया जाए तो समस्या जस की तस है इस समन सेल के गठन के बाद भी। क्यों? अब जो उनकी मानसिकता है उसको तो हम चेंज नहीं कर पाए। समन सेल का हमने एक गठन कर लिया जिला न्यायालय के अधीन, लेकिन जब तक वो मानसिकता चेंज नहीं होगी, वो कर्मठता उसके अंदर नहीं आएगी, जब तक वो उसका समर्पण नहीं होगा कि जो मुझे न्यायालय की आदेश का या आदेश प्राप्त हुआ है मैं उसका निष्पादन करूं, तब तक इस समस्या का भी निराकरण नहीं हो सकेगा। The very core of society is an autonomous and unbiased judiciary loaded with swift and effective operations, but our weighty judiciary has become awfully slow. Our laws
and their implementation and adjudication resulted in immense suffering for litigants and pushed citizens to try extra legal alternatives. India has become one of the high आज सबसे बड़ी जो समस्या है इंडिया में, उसे देखें तो क्रिमिनल साइड में भी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो भी इतने ज्यादा हैं क्रिमिनल साइड में। देखिए जो प्रिजम्पशन है वो प्रिजम्पशन इनोसेंस का है जनरली, अनलेस प्रूव्ड गिल्टी अ पर्सन इज इनोसेंट। लेकिन न्यायालय लेकिन उत्तर प्रदेश के कारागार में, कंट्री वाइड ही है, विभिन्न कारागारों में प्री कन्विक्शन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कन्विक्टेड प्रिजनर्स से ज्यादा है। यानी जो जेल की पॉपुलेशन है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की ज्यादा है, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स की वो है। There is no controversy that the biggest issue the judiciary faces is the number of pending cases. The huge backlog of cases is proving to be the primary judicial problem. This figure is increasingly growing and in fact reflect the inadequacy of the system. Increasing the number of judges, establishing more courts has always been debated, but execution is always late or inefficient or insufficient. न्यायालयों में जो पेंडेंसी है उसका पीरियडिकली समीक्षा भी होती है और ये देखा जाता है कि भाई अगर हमें अगले 5 साल में इन केसेस को तय करना है तो हमें कितने जजेस की आवश्यकता होगी और उसी हिसाब से जज स्ट्रेंथ का पुनर्निर्धारण समय समय पर किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेंडेंसी बढ़ती जा रही है जज स्ट्रेंथ के साथ साथ, और केसेस का डिस्पोजल जिस स्पीड से सोचा जाता है उस स्पीड से नहीं हो पाता है, और जो पीरियडिकल रिव्यू हुआ और जज स्ट्रेंथ को उसकी लाइट में बढ़ाया गया, एडिशन जज स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, तो उस जज स्ट्रेंथ को देने के बाद भी वो जो नंबर है वो कम नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। तो आज हमें सबसे पहले जो पेंडेंसी का इश्यू है, तो खास तौर से वो केसेस जो बहुत पुराने हैं उन सबको मिशन मोड में लेकर तय करना होगा। उसमें सारवान न्याय देना होगा, डिस्पोज नहीं करना है, सारवान न्याय देना है, सब्सटेंटिव जस्टिस देना है, सब्सटेंशियल जस्टिस देना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने उस केस को डिसाइड कर दिया या डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज और डिफॉल्ट कर दे और बाद में रेस्टोर करके उसके अपने उस पर ले आए, तो पेंडेंसी तो वहीं की वहीं रही। एक छोटे से पीरियड के लिए उसको हमने डिस्पोज कर दिया, पता लगे जी। जो कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा उत्तरदायी है। द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स अ मोर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोर्ट्स में, एफिशिएंट जुडिशरी के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और मेरा तो मानना है कि चूंकि अगर कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो उससे भी थोड़ा सा करप्शन प्रोपेगेट होता है। जो न्यायालय का कोर्ट है, वो जो रिकॉर्ड है वो भी अनसेफ रखा रहता है, उसके खोने की, मैनिपुलेट होने की, चोरी की संभावना बनी रहती है। लॉट ऑफ पेपर वर्क इज रिक्वायर्ड इन द कोर्ट्स। हालांकि इस कोविड-19 पेंडेमिक ने एक नया मोड, हाइब्रिड मोड और ये वर्चुअल मोड को डेवलप किया है और कोर्ट्स आर बीइंग इक्विप्ड, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सब जो नए ये जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमको मिल रही है कोर्ट्स में,
इससे ये जो बैकलॉग है वो थोड़ा सा कम करने में या कोर्ट को मैनेज करने में, कोर्ट मैनेजमेंट में, केस मैनेजमेंट में हमको सहायता मिलेगी। और जब तक हम कितना भी रिफॉर्म कर लें, जब तक हम सब्सटेंटिव जस्टिस पार्टीज को नहीं दे पाएंगे कोर्ट में, हर रिफॉर्म मीनिंगलेस है। तो हमें यहाँ हिट करना होगा कि हम किस तरीके से त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब आपका। And what Judge Goel has mentioned, he has highlighted all the difficulties, how it is implemented on a district court level. He has given all the details. But only one thing which he says, until unless the mindset of the general public, of everyone will not change, it's not possible. Because he says everyone is guilty, because if you are having that same mindset, what they always believe that the judges are corrupt, and he gave his own example that how he has started giving the right dates by his own writing, but still the clients and others were not accepting it. So according to Judge Goel, mindset has to be changed. Thank you very much, Judge Pramod Kumar Goel, for giving your views. I will come in the next round. I will ask one question to you, or one or two. Now I would like to invite my next panelist guest, and he is Advocate K.C. Jain. Advocate K.C. Jain is a renowned social activist and Supreme Court lawyer. He is practicing law for last 42 years on the civil side. He appeared in Supreme Court and Allahabad High Court in several important cases. He is active on various social platforms of the city of Agra. He filed several PILs in Supreme Court regarding the RTI Act, etc. Recently also he filed a petition relating to road safety. His large number of articles were published in law journals. His articles were also published in many newspapers on various subjects, including environment, RTI, culture, etc. He has varied interest, especially in RTI and environment. Welcome, Advocate K.C. Jain, on our show. Advocate Jain, you have heard Justice Rajiv Lochan Mehrotra, as well as Judge Pramod Kumar Goel, as well as Dr. Naveen Gupta. And they have given, I would not to repeat it again, paucity of time. We would like to know from you, your views as an advocate, because there are responsibilities of advocate also in the delay, everybody knows. So your views on judicial reforms in India. Advocate K.C. Jain, please. Thank you, Mr. Lal, for inviting me and giving me a wonderful opportunity to share my views before your esteemed audience and the galaxy of panelists. If we talk of judicial reforms, it is multifaceted. We can have discussion for days and days, and they would remain inadequate. But since there is a time constraint, I must focus on the principal areas which necessitate judicial reforms. First of all, I must emphasize that we do have lack of political will. You have seen the manifestos of the national parties when elections of the parliaments are held. We see the manifestos of the state government, of the political parties when they go for the poll for state assemblies, but none focus on this gigantic and problem of judicial reforms, which is punctuated by the large number of pendency of the cases. We, as Mr. Goel has rightly pointed out, it is not only the question of decision, it is not the question of disposal, it is also the qualitative aspect, which is much and intricately connected with the matter, because people are not going to have a decision, people are going to have a decision on merits, having a substantial justice, as he has rightly pointed out. Therefore, what I firstly emphasize is we need to put pressure, mobilize our opinion, so that the political parties understand that it is a common man's demand that there should be judicial reforms. As the figures has been given by Mr. Goel, I also scrolled my Google, and I found that around 4 crore 75 lakh cases were pending yesterday evening. It means about 20 crore population is being affected. Even if we take four persons
per case to be directly affected by the outcome of a decision. It is not a minor issue that a large number of population of the country is desperately suffering on account of delays in judgments. Therefore, first of all, unless we have a political will, no change will come, howsoever we discuss, because whether it is the budgetary allocation, whether it is creation of more posts, whether it is a question of infrastructure, whether it is a question of reforms in the systems connected with the justice delivery system, all these things would much depend on the political will. Therefore, we all need to build pressure so that these reforms come. And because they are the policymakers, they are the persons who are in charge of the treasury, and they have to release the funds. Now coming to the second point, that I would say that we should use the technology. Use of technology would bring a vast change. We have to talk of the system change so that we see the end result of quality and quantity difference. So therefore, I would say that we should have virtual courts. We should have e-filing. Some lawyers are in favor of virtual courts or virtual hearing. We can have a hybrid system. We can have system at the option of the lawyers. We are talking of High Court benches. We are talking of the Supreme Court benches. But whether we are able to give people the much needed relief from traveling to the High Court or the Supreme Court, if a person is to travel from South, from Calcutta, from Assam to Supreme Court, he is to spend money, his time is spent, his efforts are taken, and ultimately what happens, he doesn't know. Therefore, virtual hearing, the lesson which we have learned in this COVID period, can become a big bring a respite. All filing should be e-filing so that the question of handling of files go away. We don't need much staff to handle the e-files. Online payments of court fees, this all will curtail the prohibitive cost involved with the hearing of the matters. Then another suggestion would be, we should have the evening courts, we should have the night courts, small matters. We can pay some extra money to the judges to incentivize them. They can hold evening courts, night courts by having virtual hearings. We don't need infrastructure. They need not to sit in the courts to hear the matters. With a gigantic figure of pendency, we need to have the evening and night courts. Without infrastructure, we can have that. Use of artificial intelligence can also come to our rescue. We have to innovate our models, innovate our ways and means, how the artificial intelligence in finding out case laws, finding out the end results of litigation, that can be done. Now coming to the use of resources, I would point out that we have provisions in our constitution for appointment of ad hoc judges of the Supreme Court, ad hoc judges of the High Court. We have good judges like Justice Malhotra or Justice Goel. We can, and we have a lot of work. Why can't we appoint them as an ad hoc judge? We can appoint them ad hoc judge. The government is paying pension to them. By paying little more amount, we can have their services and significant services in matter of disposal of the matter. The Supreme Court has initiated this matter, but the government is not coming forward with positive note. We need to appoint ad hoc judges. All the judges that retire, they have good career and they have a good past track and high integrity. They should be appointed as ad hoc judges for 5-8 years. At least 70 years, they should be allowed to work. And it can be only those persons should be chosen as ad hoc judges who have good past track record. Therefore, section 127 is for the ad hoc appointment of Supreme Court judges, and section 2 and article 224 capital A is for the appointment of the ad hoc judges for the High Court. Another important initiative that the government must take is to increase the age of retirement of the High Court judges and that of the Supreme Court. Now the present retirement age is 62, it should be increased at least 65. And for Supreme Court, it should be increased to 70. We
we should understand that the experience gained by the judges is indispensable, and if we take their services, we can deliver quality service, quality dispensation of justice. Therefore, that must be done. Vacancies are to be filled time bound. The government is also at fault, and the judiciary is also at fault. Why? When they don't hold collegium, they don't recommend names. The initiation is delayed, then it is the fault of the collegium of the High Court. And if the government delays it, it is the delay on the part of the government. Therefore, vacancies, whether they are of the subordinate judiciary or that of the High Court or that of the Supreme Court, must be filled in a time-bound manner, and we must put a pressure. We are saying that it should be increased, but whatever the posts have been created, they are not even filled. What a mockery of the system. We want justice to be expedited. We want a time-bound delivery of judgments, but they don't even appoint the judges, and we are not putting pressure on the government. Why the delays in the government working function? Why the Chief Justice Collegium headed by Chief Justice delays the names of sending the names to the government? That all has to be checked and to seen. Then All India Judicial System, All India Judicial Services, the government has said about it, but no concrete initiative has been taken so far. We must have All India Judicial Service, who are transferable from one place to one state to another state to curb this corruption. Then the judge case ratio, we must have a good judge case ratio. It is stated that the present ratio is about 13 per million population. In other countries, it is up to 50 or 100. We must have a good judge population ratio. We must understand that democracy can succeed only when we have good number of judges. How can, without judges, hope that justice delivery system can be effective and time bound? The budgetary allocation, the government has very less budget for the judiciary. Most ridiculous. One of my friend who worked as the judge of the Allahabad High Court, he was saying that state of UP has more budgetary allocation for poultry farming than for the judiciary in the state of UP. Why we should have such a bad allocation for budget? We must prioritize it. We must understand that we need more budget for sustaining our judicial system. The reforms in the CPC, CAPC, Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code, Evidence Act, that is much needed. Home Minister Amit Shah has said about it, but how much time it is to take? We talk of changes, but we delay to bring them, and every day costs us, every day hurts her. Therefore, it should be done at the earliest. Then training of the lawyers, as Justice Malhotra has pointed out, lawyers are very important organ of the justice delivery system. We must see that law education is updated to have good lawyers, and because judges also are elevated from legal profession. We must hold conferences. We must update their knowledge, and legal education should be updated. And then comes the other reforms about to see that the judges are above board. They have the righteous approach. We must see that the selection process is better streamlined and good people are appointed. We are not in paucity of good lawyers who can be elevated, good subordinate officers who can be elevated to the High Court or can be taken to the Supreme Court. We can perform so nice in the field of IT. Our IT professionals can be hired by the biggest and topmost successful companies of the world. Why not? We can also perform as good judges. If we have only 34 persons as judges in the Supreme Court. Can't we have 100 judges? Can't we have more judges in the High Court also? Therefore, all these questions boil down, and the political will is to prevail. We want an effective system that is time-bound, that is quality-wise, that is satisfying to the people.
And ultimately, if we have a better justice dispensation system, our GDP would increase, our law and order position would improve, and the muscle men, which come in the way of as an alternative mechanism for dispute resolution, or the politicians who play an important role, they will all be eliminated, and ultimately the rule of law would prevail. We need constitution and the rule of law to prevail, not the musclemen, not the politician, not the corrupt people in the system. Moreover, we can also outsource our various services in the courts, which can be good alternative. Instead of keeping permanent people, we can outsource them. These are some of the suggestions. We can have a series of discussions on judicial reforms dealing with each and every facet. Time may be short, but it is an important issue. Ultimately, we need to thresh it out and to bring it to a logical end. Thank you very much for giving me an opportunity to share my views. Thank you very much, Advocate Jain. And Advocate Jain has given all the suggestions which he thinks, and what he says that as lots of more suggestions are there because of the paucity of time. And yes, it's lots of things can be churned out from these types of discussions, but it should be only thing is that it should be applicable, implementable. Then only we can implement it also. Then only we will be able to serve things. But our purpose is to just do something, give some suggestions. Let the government has to decide. Thank you very much, Advocate Jain. Now my question goes to Justice Mehrotra. Justice Mehrotra, everybody talk about the paucity of judges, or the vacancies are there. My direct question to you is, these vacancies are because the government of the day, as you know, that High Court and the Supreme Court judges has to be appointed by the recommendation of the collegium and then the approval by the government of India. Because the government of the day, whichsoever government is in the power, they want their own judges. They want those who are favoring their views. That's why these vacancies are there. Otherwise, so much unemployment is there in the country. And to say that IB report is to be waited, IB report for every judges, whether he's in the district judge or whether he's in High Court or the wherever, IB report is a matter of 5 minutes. Everybody knows what is there or not. If you have cleared the one judge initially, that you cannot say that now the IB report is adverse. And we have seen how the judges were not elevated. What are your views, Justice Mehrotra? अभी केसी जैन साहब, आदरणीय केसी जैन साहब को भी हमने सुना, और ये बिल्कुल सच है कि एक मेन रीजन डिले का जज पॉपुलेशन रेशियो भी है, जो हमारे यहाँ 20 पर बिलियन है और अमेरिका में 107 पर बिलियन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसा आपने कहा, जो भी गवर्नमेंट रही है उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, और उन प्रायोरिटीज में अब लेस सेड इज बेटर आप देख रहे हैं। कॉलेजियम पे भी प्रेशर होता है, किनका नाम भेजना है, किनको, कुछ लोगों के नाम पे होते हैं। और जो मुझे लगता है इन सब चीजों के लिए शायद अगर हम जजेस को, कॉलेजियम को कंट्रोल करना है, मान लीजिए आपको, देखिए गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट की विल पावर रिक्वायर्ड, कितनी जल्दी वो उस लिस्ट को क्लियर करते हैं। लेकिन अगर कॉलेजियम को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप ये तय करिए, जैसा कि अभी आदरणीय केसी जैन साहब ने कहा, आप एज 65 कीजिए, 68 कीजिए, 70 कीजिए, रिटायरमेंट की एज कर दीजिए, लेकिन ये तय कर लीजिए कि इसके बाद आपको पोस्ट रिटायर कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारा ये झगड़ा वहीं शुरू हो जाता है जहाँ पे पोस्ट रिटायर असाइनमेंट आपको चाहिए होता है। आपको ये होना चाहिए कि चाहे कोई ट्रिब्यूनल मैन करना हो, चाहे कोई एनजीटी मैन करना हो, चाहे वो सेंट्रल ट्रिब्यूनल हो, चाहे स्टेट ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो डीआरटी हो, सब ये जो मैन करेंगे, ये सारे सिटिंग जजेस ही मैन करेंगे। कभी यहाँ जाएंगे, आएंगे, अपनी बेंच में आएंगे, और अगर एक बार ये तय हो जाएगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा, तो शायद कॉलेजियम सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी, ज्यादा तेजी से करेंगे काम अपना, और शायद और अच्छे रिजल्ट्स आए। जस्टिस मेहरोत्रा, आपने भी पॉलिटिकली थोड़ा सा उनके ऊपर कुछ नहीं बोला। एवरीबडी नोज हाउ द गवर्नमेंट इज होल्डिंग एंड अननेसेसरी होल्डिंग फॉर 1.5 years many times
This is a very unfortunate. Thank you very much, Justice Mehrotra. I can understand. Now my question goes to Judge Goel. Judge Goel साहब, आप सब कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन है, और सही बात भी है, और पैसे का बजट कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट. वाई? वे हम कहते हैं हमारे 3 स्तंभ हैं, जुडिशरी अलग है, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. आप लोगों पे इतनी कोर्ट फीस आती है, इतनी स्टैंप ड्यूटी आती है. अगर आप कहेंगे कि ठीक है, ये रुपया जो आ रहा है हम इसी से मैनेज करेंगे, आप लोगों पे तो इतना सब कुछ है, कोई जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट के मुंह देखें. अगर आप गवर्नमेंट की ओर नहीं देखेंगे और अगर ये अलाउ हो जाए, तो मैं सोचता हूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना खराब हो गया, कई जगह मैंने भी देखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में घुसने में कष्ट होता है. पिक्चरों में तो दिखाते हैं, लेकिन जो रियलिटी भी है, बदबू आती है, फाइलें इतनी सारी होती हैं. तो आप नहीं सोचते कि अगर वो पैसे को आप ही लोग, डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो पैसा आता है, जो पैसा कलेक्ट हो रहा है, उसको वो उसी को अलॉट करके, चाहे वो पीडब्ल्यूडी को पेमेंट करें, चाहे वो किसी को करें कि भाई ये इतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है. आप क्या कहना चाहेंगे गोयल साहब, 1 मिनट के अंदर? एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन है, उसके ऊपर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा. थोड़ा कम समय में, टाइम बहुत कम है. जी 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 जी. 1980 when I had joined, तो जब कोर्ट में बैठा, तो कोर्ट की जो चेयर थी उसके ऊपर तख्ता रखा हुआ था, और जो केन उसकी हुई थी वो टूटी हुई थी. पेशकार की चेयर के ऊपर कुशन था. मैंने उसको देखा तो मुझे बुरा लगा कि यार मेरी चेयर पे तख्ता रखा हुआ है, पेशकार की चेयर पर कुशन है. कुशन, द पेशकार रेड इट, और लंच में उसने मुझसे कहा कि सर मेरे जो कुशन रखा है मैं घर से लेके आया हूँ, केन इस पे भी नहीं है, ये भी टूटी हुई है, और मैं जो उसका फ्रेम है उसके ऊपर बैठता हूँ. तो दैट वाज द सिचुएशन. दैट इन द इवनिंग आई वाज कॉल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज. उन्होंने मुझसे पूछा, भाई आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस. मैंने कहा कि सब चेयर तो टूटी हुई थी और ये था. तो बोले कि भाई मैं उसे करा नहीं सकता क्योंकि बजट नहीं है. उस समय उसकी जो केनिंग होती थी वो शायद 75 पैसे या 50 पैसे की होती थी. मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा अगर ऐसी बजट की प्रॉब्लम है तो आप मुझे परमिट करिए, मैं अपने पैसे से इसको करा लेता हूँ. तो बोले क्या क्या कराओगे? तो दिस वाज द सिचुएशन. अगर उससे आज हमने कितना ट्रेवल करके कितना पाया है उसे देखें, तो हमें लगेगा हम बहुत आगे, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास एज कंपेयर टू दैट है. जहां तक बजट एलोकेशन की बात है, जो फी, कोर्ट फी के रूप में जो पैसा मिलता है, उससे कहीं ज्यादा बजट एलोकेशन होता है. अगर हम सिर्फ कोर्ट फी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो बिलीव मी, हम कुछ भी काम कोर्ट में नहीं कर पाएंगे. हाँ, ये ठीक है कि जो टोटल जीडीपी है उसका एक मिनिमल परसेंटेज बजट एलोकेशन कोर्ट के लिए मिलता है. यहां आवश्यकता है कोर्ट फीस को बढ़ाने की भी. लेकिन दिक्कत क्या होती है, कोर्ट फीस को आप थोड़ा सा बढ़ाने की गवर्नमेंट कोशिश करती है तो उसका जो एडवर्स रिजल्ट है वो सामने आता है, एजिटेशन शुरू हो जाता है उसमें. यानी हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने में कोई विरोध नहीं करते, कोर्ट जो एडवोकेट्स की फीस है उसे बढ़ाने में विरोध नहीं करते, या जो भी एलाइड एक्सपेंसेस है उसमें कहीं विरोध नहीं करते, कोर्ट फीस बढ़ाने में हम विरोध करते हैं. तो जब तक पैसा नहीं आएगा, वो पैसा हमें कहां से मिलेगा? एक दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट को अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर का हो या फ्रीबीज का हो. आज अनफॉर्चुनेटली फ्रीबीज में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है. तो जो कोर्ट की प्रायोरिटी होनी चाहिए थी जस्टिस डिलीवरी की, जी, वो कहीं साइडलाइन हो गई है. जी जी, और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब आपका. नाउ माय क्वेश्चन गोज टू एडवोकेट जैन. एडवोकेट जैन, when the government wants something to be done, they can get it done immediately. Like I will quote the one law called surface law, where they says that the money is involved at the bank, so they can bypass everything, judiciary, everything. They just serve the notice, take the possession, do whatsoever. But a common man, if he wants to get the justice, he has to file a diwani or civil case and wait for 30 or 40 years. What is this injustice? This is nothing. After why that money is more important? That blood is blood and our blood is water. What do you say about this, Advocate Jain? A very germane question raised by you, Mr. Goel. It is the lack of sensitivity. They are not sensitive to the common man's agony
And that is why they are concerned with the public debt, with the money of the banks, but not the public concerns. I must say that the government must think about the common people also, their problems, their take the case of matrimonial dispute. It takes years together to get it resolved, and people generally have to pay money to the spouse, and then only get a matter resolved by mutual settlement. But if you say of the question of decision on marriage, then it is very difficult. Therefore, whatever the kind of dispute they are, the government have to give a serious thought to it, and have to see that budgetary allocation, technology, number of judges, and all the reforms that Okay. Thank you, Advocate Jan. Because in SARFAESI, they bypass even judiciary. There is no judiciary, and the bank people are taking. So this is something which one should think seriously. Now my question goes to Dr. Naveen Gupta. Dr. Gupta, why we are talking? We know one thing: in your state, your chief minister withdraw all his cases against him. So why? Whosoever become the chief minister, they let them withdraw, and the judiciary has no other option. So why we are crying? Let the politician rule the judiciary. Whenever they are in opposition, there are lots of cases. When they will come in power, they can withdraw the cases. Don't you think it gives a very, very bad impression of the judiciary, and your judiciary reforms will not give any proper thing unless we all are honest and we are committed to the judiciary? Then only we can talk about the reform. And as Judge Goel mentioned about the mindset change, unless this thing is not changed. What do you say about this, Dr. Gupta? Sir, regarding your particular question, I don't have words, only the intention of the people. And not only the political people, but we are all involved, because we also want to please our political bosses. Har kaun raha hai? Judiciary to kar rahi na. I cannot blame to all judicial officers, but yes, who are doing? वो तो एक बैड इंटेंशन का बात है. लेकिन मैं मिस्टर गोयल का एक पॉइंट को दोबारा से यहाँ बात करना चाहता हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर, it has to be really improved. I have been involved and associated with the JTRI for the training program of the young judicial officers. मैं जब पहले प्रोग्राम करने के लिए गया, जब उन्होंने इनिशियली ज्वाइन किया, I had a whole day program with them with a batch of 25 young officers. They were very bright, very intelligent, very creative and talented. 3 महीने के बाद दोबारा मुझे बुलाया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, सब के सब एकदम डाउन. And I just want to tell you, मैंने कहीं शेयर भी किया कि this generation is not of payload because they have option. राजीव सर जैसे, गोयल सर जैसे लोग, ये हमारी जनरेशन के पास ऑप्शन नहीं थे. तो इन सबऑर्डिनेशन को सहना, लीडरशिप का हमारे अंदर से हो सकता है, लेकिन कोई एग्जाम्पल सेटअप नहीं किया हमने. तो वो भी है कि they have इस्तीफा in their jail. तो वो सारा का सारा they were too much fed up. And if we are not able to improve the infrastructure, we are not able to attract the good judicial officers. They are going for some other areas. लेकिन अभी जैसे लॉ कॉलेज बहुत खुल गए हैं, बड़े अच्छे बच्चे आने लगे हैं. तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, टाइम शॉर्ट, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सर ने दिए, लाल साहब ने भी दिए, पर सारा ब्लेम कहीं और डाला है. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है. वेल ट्रेनिंग एडवोकेट को इकट्ठा करके क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधार सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिमिटेशंस में घिरे हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. Okay, thank you very much. Thank you. So viewers, you have seen today, it's a very serious thing, judicial reforms. But who is responsible? We blame politician, we blame judiciary, we blame advocates, we blame everyone. I think the civil society has to think, why so many litigations? For everything we are fighting and we are putting burden on our judiciary. We must take the responsibility ourselves also. Yes, judicial reforms are required. They have to be done. The government has to give priority to that. But right now, the priority of the governments, whosoever the government is, just to win the elections, to be on the chair, not to see what is happening to the judiciary. And as our panelist says,
The judiciary is the very, very important thing. And if we will not give the importance to the judiciary, what is going to happen? Who is going to get the any proper judgments about their justice? They will not get justice. If we have to take justice, first thing we should try and avoid fighting with each other, avoid going for litigations, try to resolve ourselves as earlier we used to. And the Lok Adalats are there. Though we know that about what Lok Adalat are doing, the same thing can be done but there is a budget in Lok Adalat, so people are referring the cases to Lok Adalat so that at least the budget will come. But why not we also, we must have like clubs, so many clubs are there, social clubs, organizations like Dr. Gupta is heading. Why not they organize the meetings with the litigants, with the support of some lawyers, and try to resolve so the burden can be removed. And we must pressurize, as our panelist says, we must pressurize the government to create a good infrastructure. Dr. Gupta, your point is very correct, that young generation, the youth, they have choices. If they will not get that satisfaction today, if they are not getting rooms which they expect, then how they are going to be in this judiciary system, which is very, very, and then how they will be impartial, how we can be able to remove the corruption. And the corruption starts from us, the civil society, not by them. Thank you very much. And today's program has been live telecasted by V4 News, Karu News, V4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon se, Samvad Sarokar News, Bharat Post News, Gyan, and it was shown live on Facebook and YouTube. And our endeavor to bring to you every day new topic in media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. Tomorrow our topic is learning from animals, and our panelists are Dr. Rajiv Anand, Senior Psychiatrist and Marriage Counselor, Mumbai; Miss Radhika Pai, ex-banker, activist, active educationist and social worker, Bengaluru; Miss Shalina Mamthani, animal lover, Dubai; and Dr. Shubhra Chogle, clinical biochemist and animal lover, Mumbai. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goel at 10:30 a.m. Thank you very much, Justice Rajiv Lochan Mehrotra. Thank you very much, Judge Pramod Kumar Goel. Thank you very much, Advocate Jain. And thank you very much, Dr. Naveen Gupta, for joining and enlightening us. And as our panelist says, this 1.5 hours will not serve the purpose. Definitely in our many more discussions we are going to do. So at least our aim is to awaken the conscious, the dead conscious of the government, so that at least they will think about